guys, how are you? I hope everything is fine. So today we are going to do the problem number 705. Name is design headset. Now look at the description. Design a headset without using any built-in headset libraries. Implement my headset class. Void add key. Insert the value key into the headset. Then bool contain key, return whether the value key exists in the headset or not. Then void remove key, remove remove the value key in the headset if key does not exist in the headset, do nothing. Then do nothing. Okay. If the key does not exist in headset, then do nothing. Okay. We have three functions or we have three functions in the code. Okay. First for add and then remove, then contain. So what we are going to do, look at the example number one. We have input my hashtag. This is for initialize the hash table. Add, this is for add. This is for add the element or add the like add the space. We can say space. Okay. And this is for check is if this is available or not, and the remove is for delete the element. Okay, so these all are the operations for hash table. And here we can check the hash set, initializing hash set. This is hash set. Okay, hash table. And then we have add. Okay, add, then again add हो गया. Okay, then again contain. Okay, we have checked the contain one. Then again contain. So we have one, two, three. Then add. Okay, we have total number of the element equal to operations. Okay, the output will be null, 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 true, false, null, true, null, false. Why? First, first, we are going to create the my hash table. देन ऐड वन हैश टेबल नल ही होगी भाई अभी तो ठीक है. ऐड कर दिया, अभी उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है तो नल ही आएगा. दोबारा ऐड नल ही आएगा. इफ द कंटेंट चेक द हैश टेबल अवेलेबल है, ठीक है, तो कंटेंट ने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया. देन अगेन कंटेंट, मतलब एक बार हो चुका है, डुप्लीकेट नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा. ओके, देन अगेन ऐड, फिर से नल आ जाएगा. फिर अगर कंटेंट ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक बार पहले नल आ चुका है ना, तो कंटेंट हो जाएगा ट्रू. देन अगेन एड रिमूव आ जाएगा तो नल हो जाएगा क्योंकि सारा क्लियर हो जाएगा. देन कंटेन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आप क्लियर कर चुके हैं हम, तो फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू एड द कोड. So which function will do? So this is the function of add, then this is this is for remove, and then this is for contain. Okay, so first, if the data if the data is available, then first what should we do? हम यहाँ पर सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू लिस्ट बना लेते हैं. ठीक है, उसके बाद इसे हम छोड़ देते हैं नेट के लिए. इसके बाद हम आ जाते हैं चेक करने के लिए, ऐड करने के लिए. सबसे पहले हम ऐड करेंगे. ठीक है, देन इफ की नॉट इन सेल्फ डॉट डेटा, देन हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे. ठीक है, डेटा डॉट, अगर अवेलेबल नहीं है तभी अपेंड करेंगे, अगर अवेलेबल है तो अपेंड नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे रिमूव में. फिर हम चेक करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं है. ठीक, इफ
key in self dot data. Then what we are going to do? Remove self dot data dot remove. Okay, और किससे key के लिए remove करेंगे. Then we are going to check this is available or not. If this is available, then return the value. Okay, then return key if in self dot data. So डायरेक्टली लिख देते हैं in self dot data. Okay, now these all are objects. These all are object. Now check. La 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 la. This is working well. Yes, this is working well. Now submit. I think it should work. Yes, this is working. This is the minimum code of the problem, and we have one another optimized version of this code. We can do better, and why not if we have another optimized? But here we can see we can do in this optimum matlab minimum code. We can do the problem. We can solve the problem in minimum code, minimum understanding. Then what is the matter of we go to the optimized code, when what is the matter of we go to the longer code than this and longer understanding. I think this is not a good idea to go if the problem is solved. Okay, and this is I think this is good for the problem. Thank you guys for watching this video, and if you like the video, hit the like button and hit the subscribe button to subscribe the channel for further more videos. Okay, thank you guys. Bye bye.